Hello everyone, welcome to the Unacademy. Let's crack GATE ESE with India's largest online learning platform. My dear friends, I hope all of you people know that Unacademy has become India's largest online learning platform where almost 30 plus courses has been taught by the India's top educators. So get the plus subscription now and start unlimited live and the recorded video lectures by India's top faculty. This is the biggest thing the Unacademy is providing. जितने भी फैकल्टी हैं दे आर द वेल एक्सपीरियंस एंड they are India's top educators. So no compromise in quality. So if there is no compromise in quality, means no compromise in your results. You have to only be consistent while learning anything. So myself Ajay Das, I am MTech in computer science. I have a 8+ year of teaching experience. Till now I have mentored almost 20,000 plus engineering students for the GATE, UGC NET, JRF and like training and placement. Work as a freelancer in many reputed institutes of India. For that reason, I have visited almost every cities where the coaching institutes for the GATE is established, and also qualified the GATE exam 5 times. Along with that, also qualified the Chhattisgarh State Electricity Board exam with the AIR 8. So don't be late. Download the Unacademy learning app and start your preparation sitting anywhere, anytime. So what you will get, this is the question which always used to arise in everyone minds. So my dear friends, मैं आपको बता दूं डेली लाइव क्लासेस है जो आपको दिख रहा है, इसके अलावा क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा. डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, unlimited access. Apart from this, two different things you are going to have. First thing is multiple educator for the single subjects. Once you are taking a subscription, you will be able to realize that for a single subject there are multiple educators available in Unacademy platform. So what is the advantage of this? इसके दो एडवांटेज हैं. देखिए जो एडुकेटर्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में भी है पढ़ाते हैं और हिंदी मीडियम में भी पढ़ाते हैं. सपोज इफ यू आर नॉट like understanding, if you are not able to grasp the concept in the Hindi medium or you are not comfortable in Hindi medium, then you can select the all educators who are teaching the subject in English medium. So any students from the any cities, if they are not comfortable in Hindi, they can start their learning process in English. So this is one of the biggest advantage. And since there are multiple educators for the same subject, it means if you are not able to understand any one of the concept of one particular subject, you can switch to the another educator and you can start your learning process. So किसी भी रीजन से आपका कोई भी टॉपिक का किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट छूटने वाला नहीं है. Now learn with the top educator. This is the weapon of Unacademy. Unacademy इसलिए फेमस है दोस्तों क्योंकि उन्होंने टॉप एडुकेटर को हायर कर रखा है और यही रीजन है कि रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं. सो आई हैव ओनली मेंशन द फ्यू ऑफ द एडुकेटर related with the electrical, electronics and civil, similarly from the mechanical and electrical. If you want to know more about the educators who are associated with the Unacademy, what you can do, you can download the Unacademy learning app and you can see the profile of each and every educator. Along with that, there is a special class introduced by each and every educator which is free of cost. You can also see the trial classes of each and every educator जो कि देखने की जरूरत नहीं है. If they are experienced, if they have produced tremendous results, then no need to watch the history or the background of those faculty. If you want, you can check it out, not a problem at all. But for that reason, you have to download the Unacademy learning app. So never forget to download the Unacademy learning app. Download now and start your preparation. My dear friends, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो hit the like button. Okay, say under the GATE ESE, as we know there are various branches, but let's see for which branches the Unacademy offering you the GATE and ESE preparation. So mechanical, electrical, I have listed all the branches: electrical, electronics, chemical, instrumentation, computer science and IT. So according to your branch, you can get the subscription upon individual branches. Okay, इंडिविजुअल ब्रांचेस आप अपने ब्रांचेस के अकॉर्डिंगली गेट ईएस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द सब्सक्रिप्शन मॉडल. माय डियर फ्रेंड्स,
अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन कराते हैं 5,000 है, 3 मंथ्स का अगर हम देखें तो 12,500 है, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपका लगभग 20,000 है। सिमिलरली 12th मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज द 35,000 है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशंस के लिए एटलीस्ट मुझे अपने लाइफ का 8 मंथ मिनिमम देना पड़ता है। 8 to 10 months इट विल रिक्वायर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एग्जाम। सपोज इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग, so 6 month, minimum 6 month is enough. But if you are preparing for the GATE and ESE, then you will require at least 8 to 10 months of dedication. And for that reason, I will I will just advise that go for the 12 month of subscription. And in that situation, your fees is 25,000. But once you will apply the code IFA, which is written over here, immediately you will get the 10% discount. I hope most of the students from the UP Bihar are aware of the name IPA. Okay. So after getting the discount, your fees will become the 22,500. So my dear friends, this is the minimum discount you are getting. For the more information, you can personally contact me on the Telegram number, that is the 9264954515. This is my Telegram number. You can send me the text message regarding the subscription and all. So if you are in a second year or the third year, must be you are looking for the GATE 2022, and in that situation what I will advise, go for the 24 month of subscription. So once you will compare the fee structure of the with respect to the 12 month, there is a difference of only 5,000. There is a difference of only 5,000. So logically, with the 5,000, you are getting the one additional year of subscription. Never forget this. So again, if you are applying the code IFA, which is written over here, immediately you will get the minimum 10% discount, and your final applicable fees will become 27,000. How much? 27,000. So this is the fee structure for the 24 month of सब्सक्रिप्शन, जो कि दुनिया का मीन्स इंडिया का कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स आपको नहीं दे सकता। अगर वो दे रहा है तो कहीं ना कहीं क्वालिटी या फैकल्टी पे कॉम्प्रोमाइज। सो कम टू द सब्जेक्ट, लेट्स क्रैक इट। दिस इज द स्लोगन ऑफ अनअकैडमी, और ये स्लोगन इसलिए दिया गया है बिकॉज वी नो द टीचर्स और द फैकल्टी और यू कैन से द एजुकेटर्स who are guiding you for the competitive exam, you will be able to crack the exam in your first attempt. Okay, now let's come to the subject, computer network. So my dear friend, this is the series. So today I am covering the flow control part 1, and tomorrow I will cover up the flow control part 2, and it will, so if we will think about with respect to the weightage of gate, then every year 2 to 4 marks basically covered from this particular chapter. This is the flow control. From this particular chapter, always in the gate exam 2 to 4 marks has been covered. Like in the gate 2000, in the gate 2016, they have asked 2 different questions related with the flow control, and each was of 2 marks. So you can now imagine what is the importance of this particular chapter. My dear friends, I will teach you these particular things with the real life example, so that you will enjoy the concept, and after learning the concept you are not going to make any mistake in your gate exam. So ये ही एक है जो मेरा खासियत है, जो आपको देखने को मिलेगा मेरे क्लास के अंदर। अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को मेरे थ्रू अगर आप पढ़ते हो, माय डियर फ्रेंड्स, आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, आप कभी भी न्यूमेरिकल का जो अप्रोच होता है उसमें कभी भी आप गलती नहीं करोगे। इफ यू वांट द एक्यूरेसी, देन यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। बस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, नथिंग एल्स। कॉन्सेप्ट में आप कहीं से भी वीक नहीं रहोगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोचेज होते हैं वहां पर भी आप स्ट्रॉन्ग रहोगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज द फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल. So see over here, inside the flow control protocol, we basically deal 2 different kind of, okay, the first one is stop and wait protocol, and the second one is sliding window
sliding window. Under the sliding window protocol, again we deal two different kind of protocol. One is called go back and, okay, in the short form we will represent the GBN. Okay, the second one is selective repeat, and sometimes is called reject. Okay, and in the short form we will represent by SR. So there are three different kind of protocol. This is the stop and wait. We'll start from here. Then after learning what is the meaning of sliding window protocol, we will learn about the go back and then we will learn about the selective repeat. So actually we are dealing with the three different kind of protocol: stop and wait, go back and selective repeat. But before starting or before before making a discussion about any protocol, there are few parameters about which you have to know very carefully. कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इन सारे प्रोटोकॉल्स में यूज होने वाले हैं. उन पैरामीटर के बारे में हम लोग वन बाय वन कर करके समझने का कोशिश करते हैं. I have considered a lot of example related with the flow control protocol, my dear friends. But before moving to this numerical, and all the numericals are created by me. ये आपको किसी भी टेस्ट सीरीज में, क्वेश्चन बैंक में, गेट में नहीं देखने को मिलेगा. All the numericals are very much standard and very much predictable numerical that could be asked in your GATE 2021 exam. So if you want to learn in a better way, then be with me for at least 3 different hours, today, tomorrow and day after tomorrow. Got it? So let's start from the stop and wait. Okay. First of all, I will discuss the parameters required in flow control protocol. Point C. Suppose this is the sender and the sender is connected with the receiver. So this particular path is called link. Flow control protocol is the part of data link layer protocol. ठीक है ना. फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है ये डेटा लिंक लेयर का एक पार्ट होता है. दिस इज द पार्ट ऑफ डेटा लिंक layer. See my dear friends, here the terms I am using, the link means the data is flowing through the link, means this is the link between the sender and receiver, and data will move through this link, and that's why we are saying this is the data link layer, and flow control is just a part of data link layer. Now here I will discuss three different terms. First term is transmission time. And I will indicate the transmission time by PDF. Okay. The second term is data rate, or sometimes we call the bandwidth. आप लोग इंटरनेट कनेक्शन लगाते हो ना घर पे, तो इंटरनेट वाला जो भी आता है वो आपको एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ का इंटरनेट कनेक्शन देता है, एंड दैट इज सपोज BPS. BPS means bits per second. ठीक है ना. तो कोई भी इंटरनेट कनेक्शन जब भी आप लेते हो तो आपको जो सर्विस प्रोवाइडर है वो पर्टिकुलर स्पीड का एक इंटरनेट कनेक्शन आपको प्रोवाइड करता है. सो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट द transmission time. So suppose the sender has a frame to transmit, और इस फ्रेम का लेंथ कितना है, सपोज दिस इज द L bits.
दिस इज द L bits. सेंडर हैज अ फ्रेम टू ट्रांसमिट. यहां पर हम लोग पैकेट को एक नाम देते हैं. क्या नाम देते हैं? दिस इज द frame. In data link layer, we basically give a name to a packet that is called the frame. Of course, the frame will contain the data और उस डेटा का साइज हम लोगों ने कितना एज्यूम किया है? L bits. So my dear friends, I hope you are able to see me on the screen. So just try to see me on the screen. Okay. Suppose this one is the packet. Okay. This one is the packet and this one is the node A or the sender A. So अभी ये पैकेट सेंडर के बफर में है. भाई पैकेट जब भी क्रिएट होता है तो सेंटर के बफर में ही होता है ना, मेमोरी में होता है. दैट इज द हार्ड डिस्क. और हार्ड डिस्क से वो पैकेट कहाँ पर आता है? रैम पे आता है. और रैम में आने के बाद वो पैकेट क्या होता है? ट्रांसमिट होता है. सपोज आप अपने हार्ड ड्राइव से एक फाइल ट्रांसफर करना चाहते हो, रिसीवर को आप अपना इमेज फाइल ट्रांसफर करना चाहते हो. दैट पैकेट, दैट फाइल विल कम टू द मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. एंड व्हाट द नेटवर्क लेयर डू, द नेटवर्क लेयर विल स्टार्ट ट्रांसमिटिंग दिस पैकेट. सो अभी ये पैकेट कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बफर में है. तो कितने टाइम के बाद ये जो पैकेट है पूरा का पूरा लिंक पे ड्रॉप हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन टाइम. इन हाउ मच टाइम दिस पर्टिकुलर पैकेट विल बी ड्रॉप टू द लिंक, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन टाइम. ठीक है ना. और इसके लिए मुझे दो पैरामीटर की जरूरत है. एक तो इस पैकेट का साइज कितना है, दूसरा सेंडर का ट्रांसमिटिंग स्पीड क्या है. सो the data rate which is given over here, the data rate which is given over here, this is the speed of transmission speed of sender. This is nothing but transmission speed of sender. Are you getting my point or not? Okay, so what I am trying to say over here, in how much time this packet will be dropped into the link. This is called the transmission time. This is called the transmission time. So how you will calculate the TF? I hope you people have studied the 11th, 12th and 9th, 10th class. So what is the velocity? Velocity is equal to distance by time. So how you calculate the time? Time will be distance by velocity. So my dear friends, if you know the distance, means if you know the packet size and if you know the transmission speed, then the time can be calculated. So the transmission time will become L by R second. Got it? The transmission time will be calculated as L by. Okay, now see over here. So now the packet already reached to the medium. So there will be a many number of bits. So these are the bits, and you know this one is the last bit. This one is the last bit. So how much time this bit? How much time this one bit will take to come from one point to the another point? How much time this one bit will take to travel from one point to another point? This is called propagation time. Propagate करने में कितना time लगा? So of course, if the last bit is reaching over here, means the entire frame has been received. Entire frame has been received. आप imagine करो ना, अगर ये last bit इस point पे है, ठीक है ना, और इस पॉइंट पे पहुंच गया, मींस ये पूरा का पूरा फ्रेम रिसीवर को क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड द प्रोपागेशन टाइम. सो द थर्ड पैरामीटर इज प्रोपागेशन टाइम. टाइम को कभी कभी हम लोग डिले भी बोलते हैं. दिस इज द नेटवर्किंग टर्म. This is the networking term and we will indicate the propagation delay or time by TP. P का मतलब हो गया propagation, T का मतलब हो गया time. Similarly, T का मतलब हो गया time, F का मतलब हो गया frame. एक सिंगल फ्रेम को ट्रांसमिट करने में जो टाइम लगता है, मीन्स TF मीन्स ट्रांसमिशन टाइम ऑफ सिंगल फ्रेम. ट्रांसमिशन टाइम ऑफ सिंगल फ्रेम.
Similarly, TP means transmission propagation delay between the two point or the stations. Okay, so we need to calculate this. My dear friends, ultimately how we are defining the propagation delay? It is nothing but time taken by सिंगल बिट. भाई एक ही बिट के बिहाफ पे हम लोग सोच रहे हैं, सिंगल बिट टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट टू अनदर. That clear? Is that clear? So how to calculate the propagation delay? See my dear friends, जब कभी भी कोई भी पैकेट लिंक पे आएगा तो लिंक पे जो प्रोपागेशन स्पीड होगा वो काफी डिफरेंट होगा, क्योंकि जब कभी भी सीक्वेंस ऑफ बिट्स लिंक पे ड्रॉप होता है तो इट बिकम्स द सिग्नल. Whenever the sequence of bits will drop to the link, it will become the signal, and signal always move with the velocity of light or equivalent to the velocity of light. Yes or no? क्योंकि हर एक सिग्नल जो होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स सिग्नल मीन्स वेव, क्योंकि वायर में तो वेव के फॉर्म में ही ट्रैवल करेगा ना. तो कोई भी वेव का जो स्पीड होता है दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द स्पीड ऑफ light. So to find out the propagation delay, you have to know the distance between suppose this is the d kilometer, distance between two connecting point and speed of signal. So my dear friends, suppose we are assuming this is the d upon s, where d is equal to distance and s is equal to speed of signal, which is almost equivalent to speed of light, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट. सो हाउ वी आर राइटिंग द प्रोपागेशन डिले? वी आर राइटिंग द प्रोपागेशन डिले इन दिस पर्टिकुलर. तो देखिए मैंने अपने क्वेश्चंस में 3 लेवल का क्वेश्चन दिया है. एक है लेवल 1, दूसरा है लेवल 2 और तीसरा है लेवल 3. मैंने तीनों तरह के लेवल के क्वेश्चंस को अपने में रखा है आज के सेट में. लेवल 1 का मतलब होता है इजीएस्ट लेवल, विच विल टेक हार्डली 10 to 15 सेकेंड टू सॉल्व. लेवल 2 का मतलब होता है, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने में आपको 10 to 15 सेकेंड लगेगा. मतलब जब तक आप क्वेश्चन रीड करो थोड़े से कैलकुलेशन में आप पता कर लोगे, ठीक है ना. तो ये थ्योरेटिकल भी हो सकता है, न्यूमेरिकल टाइप भी हो सकता है. लेवल 2 का मतलब होता है मॉडरेट लेवल. मॉडरेट मतलब ना ही बहुत इजी है ना ही बहुत टफ है. तो इस तरह का जो क्वेश्चंस होता है इसको सॉल्व करने में लगता है 15 to 40 सेकेंड. और ये होते हैं लेवल 3, इसको सॉल्व करने में लगता है 14 to 19 सेकेंड. अब इसका टफनेस लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है ना. नाउ लेट्स सी वन ऑफ द न्यूमेरिकल फ्रॉम द लेवल. सो जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर. Okay, suppose the distance between two node is 100 kilometer. So just draw the diagram according to the question. Suppose this is the node A and this is the node, and distance between these two nodes is given as 100 kilometer. Okay, now fine. The speed of signal is given is 2 into 10 to the power 8. Okay, speed of signal is given as 2 into 10 to the power 8 meter per second. It is given in the form of m per second. M means meter per second. Okay, find the time required to travel a single bit from one point to the another point. So how you will calculate? This is nothing but a TP, propagation delay. This is the distance by speed.
एंड दिस इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. ये किलोमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करिए. कैसे करेंगे? 10⁻³ मीटर. एंड दिस वन इज 2 इंटू 10⁸ अगेन मीटर पर सेकेंड. तो मीटर मीटर को मैंने काट दिया. और ये आंसर आपसे किससे पूछा जा रहा है? दे आर आस्किंग द आंसर इन द मिली सेकेंड. ms मीन्स what is the meaning of ms? It basically indicate milli second. ठीक है ना? मिली सेकेंड. यू नो अबाउट द मिली सेकेंड. मिली को बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻³ में. ओके, लेट्स सी. सो यहां पर ये 3 है तो ये चला जाएगा 5 टाइम्स. ये 2 0 है तो ये आ जाएगा 3. अल्टीमेटली इट विल बिकम 1/2 into 10⁻³ second. So it will become 0.5 millisecond. So what will be the right answer? The right answer will become 0.05. Got it? So this is the kind of level. This is the kind of level 1 question, which is the direct question. Okay. Now, so in this derivation, we have defined 3 different parameters. One is the transmission time, data rate, that is also a bandwidth, and the propagation delay. So यही parameter required होंगे whenever we are dealing with the either like stop and wait protocol or we are dealing with the sliding window. Now let's start with the stop and wait. See over here. Stop and wait. See, first of all, we will try to understand the meaning of stop and wait. देखिए, हर एक नेमिंग कन्वेंशन के पीछे एक रीजन होता है. Whenever the person who have invented this particular protocol, why he has given the name stop and wait protocol, you have to understand this first of all. क्योंकि जब तक आप उसके मीनिंग को नहीं समझोगे तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को तो सीख जाओगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ज्यादा टाइम तक आपके मेमोरी में नहीं रहेगा. कभी भी आपने ये सोचने का कोशिश किया है कि जिस पर्सन ने भी इस कॉन्सेप्ट को इन्वेंट किया था उसने इसका नाम पैरासीटामोल क्यों नहीं रखा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई ही हैजंट गिवन द नेम द पैरासीटामोल टू दिस प्रोटोकॉल? क्योंकि नेमिंग जो कन्वेंशन होता है दैट शुड बी रिलेटेड विद द इन्वेंटेड थिंग्स. So let's see first of all why the name was given as stop and wait. So stop and wait protocol इसलिए रखा गया, इसका मतलब होता है send a frame stop. एक फ्रेम को सेंड करिए और रुक जाइए. ठीक है ना? एंड wait for acknowledgement. And that is the reason the name was given as stop and got it. देखिए, जब कभी भी नेटवर्क में सपोज मैं सेंडर हूं, आप रिसीवर है, whenever I am sending you a frame, then how will I realize the frame which I have sent to you has been delivered or not? So of course for that also I require the confirmation frame, and that is nothing but the acknowledgement frame. Means the receiver has to send back a confirmation frame which is nothing but a acknowledgement frame. So once I will get the acknowledgement, I will be able to know that the frame has been successfully delivered. The first frame has been successfully delivered. So I will transmit the next frame. So how the structure will look like? See over here. Suppose this is the sender and this one is the receiver. And here I am just indicating the timeline. This is, my dear friend, nothing but a time. कैसे वो मैं आपको बताऊंगा.
सपोज सपोज इस पॉइंट पे सेंडर ने एक फ्रेम को सेंड किया, ठीक है ना। ऑफ कोर्स ये हमारा टाइमलाइन है, तो यहां पर t=0 टाइम पे सेंडर ने एक फ्रेम को सेंड किया, और ये फ्रेम कितने देर में यहाँ रिसीव हो रहा है, तो इतने टाइम के बाद ये फ्रेम यहाँ पर रिसीव हो रहा है, ठीक है ना। एंड आफ्टर रिसीविंग दिस फ्रेम इमीडिएटली द रिसीवर विल सेंड बैक द एक्नॉलेजमेंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक फ्रेम को सेंड किया है, फ्रेम F0 को, ठीक है ना। सपोज दिस इज द फ्रेम F0, so once the sender will receiver will receive the F0 frame, immediately it will send back the acknowledgement frame. So suppose it is sending ACK of 1. Why I am taking the ACK of 1, I will talk about this later on. See, so यहाँ पर मैंने acknowledgement frame सेंड किया, और कितने टाइम के बाद ये acknowledgement frame यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। तो this is the total time, okay, this one is the total time required for the successful delivery of single frame. So once the sender will receive the acknowledgement, it will transmit the next frame, and that one is the F1. मैंने पहले F0 भेजा था, सेंड अ फ्रेम स्टॉप, यहाँ पर ये सेंड करने के बाद स्टॉप हो गया, और उसके बाद जब एक्नॉलेजमेंट आएगा इट विल इमीडिएटली ट्रांसमिट द नेक्स्ट फ्रेम. सो दिस इज द टाइम taken for successful delivery of one frame. Successful delivery of one. Okay, this is the first thing we are realizing from here. अब एक सिचुएशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं. आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ सिचुएशन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज द सेंडर इज सेंडिंग अ फ्रेम. So up to what time the sender has to wait to get the acknowledgement? इसका कोई लिमिटेशन होगा ना. सपोज मेरा एक दोस्त है बॉम्बे में और मैं यहाँ पर इलाहाबाद में हूँ. मैं अपने दोस्त को एक पार्सल भेज रहा हूँ, ठीक है ना. और अभी कोई टेलीफोन कम्युनिकेशन टाइप की चीजें नहीं है. हम लोग चले जाते हैं 1990 में, ठीक है ना. तो टेलीफोन वगैरह नहीं कर सकते हो, ठीक है ना. तो आई एम सेंडिंग अ फ्रेम टू माई फ्रेंड हु इज जस्ट सिचुएटेड इन बॉम्बे. सो आफ्टर सेंडिंग अ पार्सल, अप टू व्हाट टाइम आई शुड वेट. भाई वो उसको पार्सल मिला कि नहीं मिला, इसका एक्नॉलेजमेंट वो हमको भेजेगा. तो इसके लिए मैं 5 साल तो वेट नहीं कर सकता हूं ना, या 50 साल तक तो वेट नहीं कर सकता हूं कि भाई उसको फ्रेम या पार्सल मिला या नहीं मिला. सिमिलरली आफ्टर सेंडिंग अ पर्टिकुलर फ्रेम, आफ्टर हाउ मच टाइम, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर डीलिंग विद द टाइम. And what is our main objective in computer network? In minimum time delivering more number of packets. Okay, so after sending a frame, how much time the sender should wait for getting the acknowledgement? It should be fixed and it should be calculated. Yes or no? And accordingly the sender will start its timer. सपोज मैंने एक सेंडर ने एक फ्रेम सेंड किया, उसी समय वो अपना टाइमर स्टार्ट कर देगा. अब वो टाइमर का टाइम लिमिट है, तो टाइमर एक्सपायर होने तक अगर एक्नॉलेजमेंट आता है तब तो वेल एंड गुड है. अगर नहीं आता है, द सेंडर विल थिंक दैट द ईदर फ्रेम और द एक्नॉलेजमेंट हैज बीन लॉस्ट. ईदर फ्रेम, या तो फ्रेम लॉस हुआ है, या तो एक्नॉलेजमेंट जो सेंड बैक हुआ था वो नेटवर्क में लॉस्ट हो गया. And what the sender will do after the timeout, the sender will immediately retransmit the same frame. So for the retransmission, the sender always set a timer. A timer हम लोग इतना नॉमिनल लेते हैं जो कि वेल कैलकुलेटेड होता है. सेंडर और रिसीवर के बीच में मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है एक फ्रेम के डिलीवरी का. अदरवाइज अगर आप टाइमर नहीं कंसिडर करते हो तो क्या होगा. सपोज अगर फ्रेम लॉस्ट हो गया तो भाई सेंडर 1-2 घंटा तक तो वेट नहीं करेगा ना कि भाई एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं आया. तो एक्नॉलेजमेंट नहीं आने के 2 ही रीजन होते हैं, या तो फ्रेम लॉस्ट हुआ है या तो एक्नॉलेजमेंट खुद लॉस्ट हो गया. और इसके लिए सेंडर इनफाइनाइट टाइम तक वेट नहीं कर सकता.
So in that situation, the sender has to set its timer. So my dear friends, here we will use the concept of timer. Means my question is, how much time, how much time sender should wait for acknowledgement. ठीक है ना, एक्नॉलेजमेंट के लिए वो कितना टाइम वेट करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो दिस इज कॉल्ड, देखिए फ्रेम का जाना और एक्नॉलेजमेंट का आना, तो दिस इज कॉल्ड आरटीटी। इसको हम लोग जनरली इंडिकेट करते हैं आरटीटी। आरटीटी का मतलब होता है राउंड ट्रिप टाइम। एक बार राउंड ट्रिप मारने में कितना टाइम लग रहा है, दिस इज कॉल्ड द राउंड ट्रिप टाइम। मीन्स सेंडर सेट अ टाइमर for each frame which indicate waiting time, which indicate waiting time. Okay, if acknowledgement does not receive before timer expire, sender will retransmit same frame immediately. Getting my point? So this is the concept basically implemented in case of stop and wait and in case of any other flow control. So my dear friends, now let's see how to calculate some parameter using the stop and wait. So just see over here. See, our ultimate objective in any protocol, either it in any flow control protocol like stop and wait protocol, our ultimate objective is to calculate the two different parameter. One is channel utilization and the second one is throughput. We need to calculate two different parameters. One is the channel utilization and the second one is the throughput. Now let's see how to calculate the channel utilization and the throughput. See over here. Suppose this is the sender and this one is the receiver. जैसा कि मैंने आपको बताया, this is the timeline. This is the time. And between the sender and receiver, this one is the link. और इस लिंक में दोनों नोड के बीच का डिस्टेंस है सपोज d किलोमीटर. Okay. Now sender has a frame to transmit. So suppose this is the frame which the sender wants to transmit. और इस फ्रेम का लेंथ कितना है, L बिट्स है. तो t इक्वल टू 0 टाइम पे ये फ्रेम अभी सेंडर के पास है, सेंडर के बफर में है. So how much time it will take to drop into the link? This is called TF. Okay, this is called TF. So this frame will reach or you can say will drop to the link. So यहाँ पर अब टाइम कितना हो जाएगा, t इक्वल टू TF. Now how much time this last bit will take to reach over here? So this is nothing but TP. So after the TP time,
this frame will be received by the receiver. Okay, will be received by the receiver. So here the total time t is equal to what it will be, tf plus tp. Means after tf plus tp time the entire frame will be received by the receiver. So just after receiving the frame, what the receiver will do, it will create a acknowledgement frame. So this is nothing but a acknowledgement frame. This is the ACK, and this one is nothing but the actual frame, or you can say the data frame. भाई डेटा से ही तो कम्युनिकेट करते हैं ना, एक्नॉलेजमेंट तो बस कंफर्मेशन फ्रेम है. दिस इज नॉट अ कम्युनिकेटिंग फ्रेम, it is just a confirmation frame. Acknowledgement is just a confirmation frame, and this data frame is just a communicating frame. Okay, so now the sender will immediately create an acknowledgement with respect to this frame. इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये एक acknowledgement फ्रेम को जनरेट करेगा, and what it will do, first of all it will drop the acknowledgement frame into this medium. So of course how much time it will take, ये भी तो एक फ्रेम ही है ना, and it will take the time that is called the t of ACK. ठीक है ना, t of ACK मतलब क्या हो जाएगा, what is the meaning of t of ACK? So this is the transmission time of ACK means acknowledgement. Got it? Now again इसके लास्ट बीट को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो ऑफ कोर्स अगेन इट विल बी अ टीपी. सो यहां पर इस पर्टिकुलर टाइमलाइन पे टोटल टाइम कितना होगा भाई, द टोटल टाइम टी विल बिकम, यहां तक पहुंचने में टीएफ प्लस टीपी लगा था, राइट डाउन ओवर हियर टीएफ प्लस एन प्लस इसका ट्रांसमिशन फिर से टीपी. दिस इज द टी ऑफ एसीके प्लस, got it? So this is nothing but the total time. How you can write it? You can write it tf plus tp दो बार आ रहा है, तो 2tp and plus t of ck. So this one will become the total time. So in this time the sender will realize the frame has been successfully received. तो आप समझ सकते हो जो टाइमर का टाइम होता है वो इसी के अकॉर्डिंगली सेट किया जाता है, जो टाइमर का टाइम होगा, क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम टाइम है किसी भी एक फ्रेम के सक्सेसफुल डिलीवरी का. सो द टाइमर ऑफ द सेंडर विल बी सेट अकॉर्डिंग टू दिस टाइम. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ऑल ऑफ यू? क्लियर एवरीवन? नाउ let's see how to calculate the channel utilization and what is the meaning of channel utilization. Now I am going to calculate the channel utilization. ठीक है ना, और चैनल यूटिलाइजेशन को हम लोग इस सिंबल से इंडिकेट करेंगे, ईटा से. तो यहाँ पर भी आप देख लो एक बार, चैनल यूटिलाइजेशन बेसिकली हम लोग ईटा से इंडिकेट करेंगे और थ्रूपुट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आर से. ठीक है ना, व्हाई आई एम इंडिकेटिंग द थ्रूपुट बाय आर ई आई विल टेल यू लेटर ऑन. ओके, चैनल यूटिलाइजेशन. सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ चैनल यूटिलाइजेशन. देखिए यूटिलाइजेशन एक टर्म्स है जो आप किसी के भी रेफरेंस में यूज कर सकते हैं. यहां पर हम लोग चूंकि चैनल का मतलब क्या होता है, लिंक. समझिए बात को, ठीक है ना, चैनल और यू कैन से लिंक. ठीक है ना, तो ये सेंडर और रिसीवर के बीच में जो वायर है इसको हम लोग लिंक भी बोलते हैं या इसको हम लोग चैनल भी बोलते हैं ना, इसको हम लोग चैनल भी बोल सकते हैं. तो गेट कैन आस्क either the link utilization or the channel utilization. The meaning of both the terms are equivalent. So इसमें मिसगाइड नहीं होना है और ना ही इसमें परेशान होना है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है. इट इज द इंग्लिश टर्म्स, बट whether it is given the channel or the link, the meaning of both the terms are same. So please try to understand. So channel utilization,
So my dear friends, I hope you have studied about the terms utilization in operating system. रेफरेंस हम लोग चेंज कर देते हैं. जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में रेफरेंस के तौर पे हम लोग क्या लेते हैं, सीपीयू. सो देयर वी टॉक अबाउट द सीपीयू यूटिलाइजेशन. यहाँ पर हम लोग रेफरेंस के तौर पे किसके ले रहे हैं, चैनल. सो वी आर कॉलिंग द चैनल यूटिलाइजेशन. तो सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आपने अगर अपने कंप्यूटर को 10 घंटा ऑन रखा, ठीक है ना, 10 घंटा अगर आपका कंप्यूटर रन कर रहा है, तो उस 10 घंटे के ड्यूरेशन में सीपीयू कितना यूटिलाइज हो रहा है. तो भाई सीपीयू किसके थ्रू यूटिलाइज होगा, प्रोसेस के थ्रू, यस और नो. The CPU will be being utilized by the different process. Similarly, the channel will be utilized by the data packet. So the channel utilization is always considered as a data packet. The channel utilization or the link utilization is always considered as data. Are you getting my point or not? जैसे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं उसको समझना. सपोज मैंने आपको 10 आवर्स अलॉट किए, ठीक है ना, और मैंने आपको बोला कि इस 10 घंटे में आपको फिजिक्स पढ़ना है. एंड सपोज हाउ यू हैव यूटिलाइज ऑल द 10 आवर्स, आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग इट. यू हैव स्टडीड द 4 आवर फिजिक्स and 3 hours chemistry, and the remaining 3 hours you have just spent watching the movie. So my dear friends, with respect to the physics, how many time you have spent? Only 4 hours out of 10 hours. So your utilization will be calculated as 4 by 10. भाई आपने केमिस्ट्री पढ़ा, हिंदी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने फिजिक्स कितने घंटे पढ़ा, दैट वाज माय कंसर्न. तो यहां पर जो चैनल यूटिलाइज हो रहा है वो डेटा फ्रेम के करस्पॉन्डिंग कितना यूटिलाइज हो रहा है, दैट इज माय कंसर्न. अब यहां पर अगर आप एक्नॉलेजमेंट फ्रेम सेंड कर रहे हो तो ऑफकोर्स एक्नॉलेजमेंट फ्रेम के कारण भी ये चैनल यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन ये मेरा कंसर्न नहीं है. सो अल्टीमेटली हाउ वी विल कैलकुलेट द चैनल यूटिलाइजेशन. सो दिस इज नथिंग बट transmission time of a frame divided by total time. This is the TF plus 2TP and plus T of CK. Means इस फ्रेम के कारण चैनल कितना यूटिलाइज हुआ है, दैट इज माय कंसर्न. सो टोटल टाइम एक फ्रेम के सक्सेसफुली डिलीवरी में था कितना, TF plus 2TP plus T of ACK, out of which we have only utilized the channel with respect to the frame, and that time is TF. So here the channel utilization, or you can say the link utilization, will be considered as TF upon TF plus 2TP plus T of CK. Got it everyone? Now अब कोई भी लिंक का जो यूटिलाइजेशन है, कोई भी लिंक का यूटिलाइजेशन है या तो 0% हो सकता है, मीन्स अगर आप कोई भी डेटा पैकेट सेंड नहीं कर रहे हो 1 घंटे तक, मीन्स लिंक का यूटिलाइजेशन क्या है, 0 है. और अगर आप पूरा का पूरा लिंक फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो 100% होगा. तो किसी भी मशीन का एफिशिएंसी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, किसी भी मशीन का जो एफिशिएंसी होता है वो मैक्सिमम 100% होता है. सो द वैल्यू ऑफ ईटा विल वैरी बिटवीन 0 to 1. 0 means 0% to 1 means. Now let's try to understand the physical significance of this. See over here. Suppose ये हमारा sender है and this one is the receiver, and you are sending a data frame, ठीक है ना, this one is the data frame elements, ठीक है ना. तो सपोज इस पूरे चैनल का जो लेंथ है ये सपोज कितना है, 100 है, आउट ऑफ विच आपने कितना एरिया ऑक्युपाइड किया है बाय द डेटा फ्रेम, ओनली द 20% ऑफ एरिया. दिस इज द 100% एरिया, एंड आउट ऑफ विच हाउ मच एरिया यू हैव ऑक्युपाइड बाय द डेटा frame, only 20% of area. So here the utilization
will become 20 upon, so this is nothing but the 20% utilization, or you can say 0.5. So this is the first scenario. In the second scenario, what could it be happen? If this is the sender, this one is the receiver, and you are sending a frame of size equivalent to the size of link, equivalent to the size of link. This is the frame of L bits. तो इस सिचुएशन में ईटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और यू कैन राइट 100% channel. Are you getting my point or not? So I'm considering this all, I'm just considering this all in half duplex mode. In half duplex, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा. I am considering we are working in a half duplex. क्लियर है? हाफ डुप्लेक्स मोड मतलब एक ही डायरेक्शन है पैकेट के जाने का. इफ वी आर वर्किंग इन द फुल डुप्लेक्स मोड मतलब पैकेट यहां से भी जा सकता है और यहां से भी आ सकता है. सो इन दिस सिचुएशन वी आर ओनली एज्यूमिंग वी आर वर्किंग इन अ हाफ डुप्लेक्स. Clear everyone? Now let's see how to calculate the channel capacity and what is the meaning of channel capacity by channel or link capacity. See over here, channel capacity, or you can say the link capacity. Please note it down क्योंकि कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चंस आते या इससे किस तरह के क्वेश्चंस क्रिएट होंगे आई विल टेल यू. सो लिंक कैपेसिटी का मतलब क्या होता है पहले इसको समझिए. सपोज ये हमारा सेंडर है एंड दिस वन इज द रिसीवर, और ये सेंडर एंड रिसीवर के बीच का क्या है लिंक है. तो लिंक का कैपेसिटी मींस भाई यहां पर बिट्स मूव कर रहे हैं. सो दिस बिट्स कुड बी 1 1 0 0 1 0 1 1 1 अप टू डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आएगा. तो मैक्सिमम इतने बिट्स यहां पर फिल्ड हो सकते हैं. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैनल और द लिंक कैपेसिटी? इट मींस हाउ मेनी बिट्स कैन बी accommodated inside the channel. How many bits can be accommodated inside channel, or you can say, so this is nothing but the लिंक कैपेसिटी. भाई जैसे कि आप एक बकेट का कितना कैपेसिटी है पानी भरने का, तो आप क्या करोगे पानी गिरते रहोगे, लास्ट में आपने मेजर किया कि भाई 12 लीटर, तो उसका कैपेसिटी 12 लीटर हो गया. सिमिलरली वी विल ट्रांसमिट द बिट्स अगेन एंड अगेन एंड वी विल चेक हाउ मेनी बिट्स हैज बीन accommodated inside the link. That will represent the link capacity. So this is nothing but this is calculated as a bandwidth. This is also called the bandwidth delay product. This is called the bandwidth delay product. What is the bandwidth over here? R. Delay means propagation delay. So TP. R into TP. When you will write the R into TP, if we are working in a half duplex mode, half duplex मतलब एक ही डायरेक्शन से पैकेट जा रहा है, लेकिन यही लिंक कैपेसिटी कितना हो जाएगा? इट विल बिकम R into 2TP if we are working in a full duplex में. तो अगर हम लोग फुल डुप्लेक्स मोड में काम कर रहे हैं तो लिंक कैपेसिटी सीधे ट्वाइस ऑफ डिले हो जाएगा. एंड इफ वी आर वर्किंग इन अ हाफ डुप्लेक्स मोड देन इट विल रिमेन्स R into TP. My dear friends, I hope you know about the half and full duplex mode. ये सेंडर है और ये रिसीवर है, और सेंडर और रिसीवर के बीच में बस एक ही लिंक है, ठीक है ना, एक ही लिंक है जाने का. तो इसको हम लोग बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ full duplex? This is the sender and this one is the receiver.
और इन दोनों के बीच में इस तरह से लिंक क्रिएटेड है। तो आप देखो ना, अब बिट्स, जितने बिट्स यहाँ होंगे उतने ही बिट्स यहाँ पर भी हो सकते हैं। तो इट विल बी जस्ट ट्वाइस ऑफ टीपी, इट विल बी जस्ट ट्वाइस ऑफ टीपी। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ फुल डुप्लेक्स एंड दिस इज द सिनेरियो ऑफ half duplex. Now considering this particular things, you just try to solve this particular numerical. Okay, I'm giving you one of the numerical. Just see this numerical. What the question is saying, please try to understand. If the data rate of the link is, here it is given as the data rate, which is 20 MB. Yes, M means mega. Okay, and signal propagation speed is 200 meter per microsecond. My dear friends, please try to write. Okay, speed is given as speed of signal. Speed means speed of signal. It is given as 200 meter per microsecond. What does it mean? 200 meter divided by micro means 10 to the power minus 6 second. So you can write 200 into 10 to the power 6 meter per second. So you can write 2 into 10 to the power 8 meter. So this is almost equivalent to the light. Okay, fine. Then the number of bits, that can be placed on the channel of 20 kilometer. My dear friends, here nothing is given whether we have to apply the half duplex mode or the full duplex mode. In that situation, we will simply assume we are working in a half duplex. We are working in a half. They're just asking the one way direction. So suppose this is the sender, this one is the receiver. So how many bits can be accommodated between the sender and receiver? So for that reason we require the TP. We require means channel capacity. What is the CC? This is the R into TP. What is the value of R is given? The value R means bandwidth. This one means bandwidth. So bandwidth is given as 20 into 10 to the power 6. See guys, 1 M in computer network means 10 to the power 6. Okay, and after that it is given as BPS, means it will become bits per second, into what is the value of TP over here. So this is the speed, and what is the distance between two connecting point? This is the 200. This is nothing but the 200 meter. So ultimately how the TP will be calculated, you know about the TP. The TP is nothing but the distance by speed. So just write it over here. So this is the distance is 200 meter divided by speed. What is the speed given over here? The speed is we have calculated 2 into 10 to the power 8 meter. 2 into 10 to the power 8 meter per second. So meter will be cancelled, and this second and this second will be cancelled. Now 10 to the power 6, we will cancel it, it will become 2. Again we will cancel this, and 2 will be cancelled by this. So ultimately what we are getting, we are getting the only 20. Ultimately what we are getting the only 20 bits. So my dear friends, let's try to check whether we are doing any mistake or not. Okay, this is 200 kilometer, not a meter. This is the 200 kilometer. Please correct it. That's why I am thinking why I am getting the 20 bits and none of the options. So just see over here, this is the 200 kilometer. So here let me modify the things.
So this is nothing but 200 kilometers. So it will become 10 to the power 3 meters divided by band, that is the speed. What is the speed we have calculated? 2 into 10 to the power 8 meter per second. So this second will be cancelled out, meter will be cancelled out, and 10 to the power 8, 10 to the power 8, just cancel this, it will become 10 to the power 2, just cancel this, it will become 10. From 2 we will cancel over here and it will become 100. So we are getting 20 into 100 into 10. This is the 1000 bits. So here we are getting 20,000. So the right answer will become, got it. So the right answer will become B. So sometime they can ask the question related with the channel capacity also. Okay. Now let's see. Let's see. What is the formula we have basically derived? We have basically derived in case of stop and wait for the channel utilization. This is the TF upon TF plus 2TP plus T of acknowledgement. Just keep it. Just keep it. I'm just taking it. Fine. Just taking to the next slide. So see over here. This formula we have got in case of stop and wait protocol. In case of stop and wait. Fine. This is the channel utilization in case of stop and wait protocol. My dear friends, see, I am taking a cases. If L of ACK, what is the L over here? Frame size of acknowledgement. So if L of ACK is tending to 0, then L of ACK means frame size of acknowledgement is tending to 0, means if it is very small, then what will happen? T of ACK we know this is equivalent to the L of ACK divided by bandwidth. So of course this will tend to 0. So in that situation the link utilization will become TF upon TF plus 2. So just keep it. Just keep this. So this is the link utilization if the transmission time of acknowledgement frame is negligible. This is the link utilization if, so it will be given inside your question. Okay, whenever you are solving any problem, it will be given inside the question whether you have to consider the transmission time of acknowledgement or not. So if transmission, and if nothing is given, then you have to consider the transmission time of the acknowledgement as a negligible. If transmission time of ACK is okay. Now let's calculate the throughput. Let's calculate the throughput in case of stop and wait. Sometimes we call the throughput as a effective data rate. As a effective data rate. So either they will ask the question related with the throughput or effective data rate, meaning of both the terms is same. So R is the data rate and we are writing the E over here. R is the data rate and E means effective. That's why RE is indicating the effective data rate. My dear friends, already we have dealt with the terms throughput in case of operating system. What is the meaning of throughput? The number of process executed per unit time. Per unit time में कितने process execute हो रहे हैं, that is the meaning of throughput. Similarly, in case of computer network, what is the meaning of throughput? The number of bits transmitted per unit time. This is nothing but number of bits
transmitted per unit time, per unit time. So what is the total time in case of stop and wait? This is the TF plus 2TP. Means in this situation we are assuming T of ACK is tending to 0. So in that situation the total time will become this, and out of this time how many frame we are transmitting? We are transmitting only one frame. And what is the size of frame? L bits. So how many bits we are transmitting? We are transmitting the L bits. So L number of bits are transmitting over the total time TF plus 2TP whenever we are considering the T of ACK is tending to 0. Now I'm just modifying this formula. So just see over here, we are dividing the L by R and again we are multiplying by R. Nothing will change. Again TF plus 2. My dear friends, you know what is the meaning of L by R? This is the transmission time of a single frame. See over here. So this is TF upon TF plus 2TP, and what is the meaning of this? TF upon TF plus 2TP. So this is the data rate, or this is the channel utilization. So this is eta into, so ultimately we are getting the R effective, right? Of course the dimension of eta is nothing. This is the dimensionless, and the value of eta lies between 0 to 1 because this is the channel utilization. This is the channel utilization, means the effective data rate will become equivalent to the actual data rate. See over here. Here this one is the effective data rate, effective data rate, and this R is nothing but the actual data rate. Actual data rate. Now please try to understand why I am saying this is the effective data rate. We are saying this is the effective data rate because this depends upon the channel utilization. See, if the channel utilization is 100%, then it is equivalent to the actual data rate. And if the channel utilization is below the 100%, means if it is a 60%, then the effective data rate will vary accordingly. And that's why we are saying this is the effective data rate, because it is affected by the channel utilization. It is affected by the channel utilization. So finally, what we can write? We can write R effective is equal to L upon TF plus 2TP, and this one is equivalent to eta into. So inside your question, whatever the parameter is given, you can solve the question accordingly. Suppose अगर आपके एग्जाम में directly channel utilization given है और actual data rate given है and they are asking the throughput, you can directly calculate it. And if they have given the like L, R and TP, then you can apply this formula. Are you getting my point or not? So let's see one of the numerical related with the stop and wait protocol. Let's see over here. Okay, see over here. A channel has a bit rate of 8 kbps. Bit rate of 8 kbps and one-way propagation delay of 20 millisecond. One-way propagation delay का मतलब होता है सिर्फ पैकेट का जाना. This is called TP और one-way propagation delay. और acknowledgement का आने का मतलब होता है again TP. So this is called two-way propagation delay. एक बार जाना फिर आना. One-way का मतलब हो गया सिर्फ जाना. Means according to the question, what is the value of TP is given? 20 millisecond. Okay. And channel bandwidth. हर एक पैरामीटर को लिखते चलो. R is given as 8 kbps. Okay. The channel uses stop and wait protocol. चलो ठीक है भाई. The transmission time of the acknowledgement is negligible. Of course, what does it given?
T of ACK is tending to 0. It is given inside the question. Okay. Now, to get the channel efficiency of 80%, channel utilization or efficiency, meaning of both the terms is same. See, my dear friends, channel utilization, भाई जितना यूटिलाइज करेंगे उतना ही एफिशिएंसी होगा, और यू कैन से द efficiency. The meaning of both the term is same. So just see over here. To get the channel efficiency of 80%, the minimum frame size should be, and you have to answer in the form of bytes. This is the numeric type question. Okay. So in case of stop and wait, we know the channel utilization or the efficiency is TF upon TF plus 2TP. Yes or no? If T of ACK is tending to 0, which is given inside the question, ये efficiency कितना given है? 80% is equal to TF, and we know what is the transmission time of frame. This is the L by R, जिसमें से आप यहाँ पर देखो inside the question it is given, R is given, and you have to find out the frame length. At what they are asking? They are asking the minimum frame size. So एक पैरामीटर दिया हुआ, दूसरा पैरामीटर आपसे पूछा जा रहा है. So just write down over here L upon R divided by again TF. This is the L upon R plus 2. What is the TP given over here? 20 millisecond. So you can write 80 means 8 upon 10. तो भाई आप यहाँ पर देखो ये R आपस में कट जाएगा और यहाँ पर ये R मल्टीप्लाई हो जाएगा. So what we can write? We can write L upon, this one will become L plus, this one will become 2 into 20 into R. What is the value of R is given over here? 8 kbps. So 8 kbps. What is the meaning of kbps? K means kilo, kilo means 10 to the power 3 bit per second. Fine. And this time was given in millisecond. तो convert, ये जो है 8 kbps ये given है bits per second में, तो ये मिलीसेकंड में है, तो मिलीसेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करिए तो 10 to the power minus 3 सेकंड. So this second will be cancelled out and this one will be cancelled out by this. So ultimately what we can write? We can write 8 upon 10 is equal to L upon L plus, देखिए 2 into 20 into 8. So we can write 40 into 8 bits. भाई मुझे पता है कि 8 bits का कितना होता है? 1 bytes होता है. So rather than writing 8 bits, we can write the 40 byte. Yes or no? इस पूरे का जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 40 bytes, और मुझे बाइट में ही आंसर करना है. We have to answer in the form of bytes. So this implies क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो कितना होगा? 10L is equal to 8L plus 40 into 8 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से. अब यहाँ से ये कितना आएगा? 2L is equal to 40 into 8. This implies L is equal to 20 into 8 and ये हो जाएगा 160. This one will become the, so the right answer of these questions will become here 160. This is the numeric type questions and you can easily answer the value 160 over here. So my dear friends, I hope you enjoyed the session. This is the series. Today I have only discussed the basic parameters, channel capacity and the complete analysis of the stop and wait protocol and all the related numerical. Tomorrow I will discuss the sliding window protocol, which is the part 2. My dear friends, once again I will tell you, never forget to use the code IFA. So just now download the Unacademy learning app and get the subscription. While getting the subscription,
Never forget to use the code IFA to get minimum 10% discounts. Also, never forget to subscribe this channel. Okay, so you can use the code IFA. You can press the bell icon button to get all the notification, and put your valuable comments. Put your valuable comments, because once you are giving your valuable comments, it is saving a lot of time to the other students, whether the video is useful or. Okay, so you can contact me for numerical related questions, for the question related things, and for the subscription in this number. This is my telegram number, 92649545. And थैंक यू वेरी मच गाइस. गुड नाइट, टेक केयर, मस्त रहिए, मेहनत करिए और लाइफ में आगे बढ़िए. बाय, टेक केयर.